Hello and namaste. I'm Samir Satpathy welcoming you to the lecture number 2 of Ray Optics and Optical Instrument. So, in the last class, we have discussed about the plane mirrors, yes, and about the reflection of light, how light propagates, and what are the phenomena that can be takes place whenever light comes from one medium to another medium, yes or no. So, I hope you better understand the last lecture. যদি তুমি দেখি নাও তাহলে যাই সেই lecture টা দেখে দিও. So today in this lecture we are going to discuss some new topics, that is what spherical mirrors, the mirror formula and uses of spherical mirrors. Okay. अच्छा spherical mirrors बुझिया को हेले हमको कौन करिया पड़े फर्स्ट गोटे स्फीयर को इमेजिन करिया पड़े तो गोटे ग्लास रो स्फीयर को इमेजिन करो ठीक अछि देखो मु ड्रॉ करछि दिस इज अ ग्लास स्फीयर ओके स्फीयर वाला देखा होछि ओके मु एबे कोन करबी आर गोटे छोटिया पार्ट को कट आउट कर देबी देखो चेट है हला लेट्स से दिस इज ए दिस इज पी दिस इज बी हला मन छोटिया पार्ट को जदी कट आउट करबी मते किछि ए टाइप रो फिगर मिलियो बोदे देखो ठीक है मते गोटे छोटो पार्ट मिल जिवो जोटा कि से स्फीयर पार्ट काटला पर एमति किछि देखा जिवो एबे आमे कोन करिवा से ग्लास स्फीयर जो नै दिला ना तारो बाहर पटे आ गोटे सेमति पार्ट को नै जिवा तारो भीतर पटे कोन करिवा पॉलिश कर दो ठीक अछि देखो ठीक है सिल्वर पॉलिश कर दो बस तो मैं एमति आ गोटे छोटो पार्ट काट नउछि एटा को कॉपी पेस्ट कर दो आमे चलो एबे मु कोन करबी देखो मु फर्स्ट फिगर देखो मोडा को ए बोली ना बोलछि एटा को बी बोली ना बोलछि तो ए फिगर रे मु कोन करबी भीतर पटटा को पॉलिश करी भीतर पटटा को पॉलिश माने सिल्वर पूरा पॉलिश कर देबी बाहर पटटा कोन हे जिवो ग्लास रहि जिवो ओके देखो ठीक देखाउ छी भीतर पटटा कोन करली मु पॉलिश कर देबी ओके तो भीतर पटटा को जदी पॉलिश कर देबी ताहले आको हमें कोन कहबा तमरो कन्वेक्स मिरर बाहर पटटा कोन रह गेला तमरो ग्लास रह गेला कोनोस भी मिरर रे गुड साइड पॉलिश ही थाउची गुड साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस थाउची तो मु गोटे फर्स्ट ग्लास प्योर इमेजिन करली ग्लास प्योर इमेजिन करके छोटो कट नेला पर मते एमदी ए और बी टाइप रो फिगर मिलला ठीक मु कोन करबी ए जो फिगर अछि बा ए जो पार्ट अछि सेटा रे कोन करली भीतर पटटा को पॉलिश करी तो बाहर पटटा कोन होछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो बाहर पटटा जदी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ला ताको हम कोन करबा कन्वेक्स मिरर सेकंड फिगर को देखो ठीक सेकंड फिगर में मु कोन करबी बाहर पटटा को पॉलिश कर दूं देखो बाहर पटटा को पॉलिश कर दूं जदी मु बाहर पटटा को पॉलिश करबी ताहले भीतर पटटा कोन हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो बस आको हम कोन कहबा concave mirror आई होप मन रही जो तुम जदि बाहर पटटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होची ताले से को कन्वेक्स मिरर कहबा जदि भीतर पटटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होची ताले ताको कोन कहबा हमें कनकेव मिरर हला पॉलिश करेडा भल से देखा गला कि ना देखा गला अभी जो सुंदर से करबा बस एमदी कर दिले भलो हम नहीं कि मु भीतर पटटा कोन करली पॉलिश कर देला भीतर पटटा पॉलिश कर लो एटा को हम कोन कहबा कन्वेक्स मिरर जदि मु बाहर पटटा को पॉलिश करबी ताहले एटा कोन कहबा कॉनकेव मिरर हला तो सेवेट के बहुत देखा गला बुझा पड़ला हम कि ना अच्छा
तो एठी मु मेंशन कर दोची एठी बाहर पटटा कोन अछि हमरो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अछि एंड भीतर पटटा कोन अछि पॉलिश हे अछि एंड सेकंड फिगर रे हम देखि परछो बाहर पटटा पॉलिश हे अछि एंड भीतरटा हमरो कोन अछि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अछि तो कोन हम बुझले गोटे स्फीयर नेले एंड स्फीयर गोटे छोटो पार्ट कट करले छोटो पार्ट कट करिया द्वारा हमको कोन मिलला दीटा स्फेरिकल मिरर मिलला हला कोन स्फेरिकल मिरर मिलला गोटे होची कनकेव स्फेरिकल मिरर आ गोटे होची कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रे कोन देखिला हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अछि सेटा बाहर साइड रे अछि एंड कनकेव स्फेरिकल मिरर रे हम कोन देखले कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ता कोन अछि ना भीतर पटे अछि हला बुझि परला बोलसे तो एटा को कनकेव रु भी मन रखि परियो केव माने कोन गुंफा जोरा कि भीतर पट को थाउछि तो सेटा तो मन रख परियो कि कनकेव जो पोर्शन अछि सेटा सब भीतर पटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस थिबो आ तर ऑपोजिट माने बाहर पटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ता कोन हिबो कन्वेक्स हिबो क्लियर अच्छा जिबा आगु तो मु किछि नोट्स लिखि के आनि छी सो दैट हमर टिके टाइम पहुंचबो बोली आ डेरिवेशंस गुडा को मैं तुमको करि के देखेबी हला बाकी ए नोट गुडा को लिखि के आनु छी एंड तुम आगे पढ दउ छी सो दैट तुम भल से बुझि परबे पढिबन बुझिबन ओके चल so spherical mirror is a reflecting surface spherical mirror is a reflecting surface which forms part of a hollow sphere तो मु कोन करथली गोटे स्फीयर एज्यूम करथली हां सेटा होलो स्फीयर होवा दरकार सो दैट तुम भीतर टा किबा बाहर टा पॉलिश कर परियो ना बा भीतर टा बेसिकली पॉलिश कर परियो तो होलो स्फीयर इट इज ऑफ टू टाइप्स जस्ट डिस्कस करला हमें गोटे होची कनकेव मिरर आ गोटे होची कन्वेक्स मिरर एठी आउ किछि नोट्स अछि देखो इन ए कनकेव मिरर द आउटर bulged surface of the sphere is silvered and polished हां कि ना जस्ट हम देखले कनकेव मिरर केस रे आउटर सरफेस टा कोन हे कि अछि बल्ज आउट हे कि अछि जोटा कि हमें पॉलिश कर दै छथि हां कि ना ओके as a result, the inner hollow surface becomes the reflecting surface since this surface curves inward. ठीक माने इनवर्ड सरफेस अछि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होबो एंड बाहर पट जो बल्जिंग आउट सरफेस अछि सेटा हमर कोन होबो पॉलिश्ड सरफेस होबो इट रिजेम्बल्स द इनसाइड ऑफ अ कैप concave mirrors are known as converging mirrors आकु converging mirror कोन बाय कहबा देखो ठीक है ये होची तमरो गोटे को टाइप मिरर सर अपन पॉलिश करूँ तापर जना पड़ियो ठीक ओके मु तो कोन करली वर्तमान बाहर पटटा को पॉलिश कर देली पॉलिशटा मु एमडी स्ट्रक्चर द्वारा शो करू छला ठीक अछि तो जदि मु रे ऑफ लाइट्स को आ ऊपर इंसिडेंट करेबी बहुत सारा पैरेलल रे ऑफ लाइट जोरा को हम बीम बोली कहउतले जदि बीम ऑफ लाइट को मु कोन करेबी आ ऊपर इंसिडेंट करेबी से माने कोन करिवे कोनोसी गोटे पॉइंट रे आसी की मीट करिवे सब जगह रे एमती गोटे पॉइंट रे आसी की मीट करिवे सो बेसिकली रे गुडा को कोन होउचंदी कन्वर्ज होउचंदी माने कोनोसी गोटे पॉइंट आडू को आसी की इंटरसेक्ट करूचंदी परस्पर सहित हला से पॉइंट को बेसिकली हम गोटे फोकस पॉइंट बोली कहबा जोटा कि हम फर्दर डिस्कस करिया तो एठी कोन होउची ना रे ऑफ लाइट जते बेले कोनोसी कनकेव स्फेरिकल मिरर ऊपर जाई कि इंसिडेंट होउचंदी से माने कोन करचंदी कोनोसी गोटे पॉइंट ऊपर आसी की कन्वर्ज होउचंदी बोली कहबा गोटे पॉइंट आडो को आछंदी बोली हम कहि परिबो हला so that these mirrors are called as converging mirrors बुझि परलो because they tend to bring parallel rays of light together to at a single point and that single point is called what focus तो एटी जो पॉइंट ता बनलाना छ ए पॉइंट को हम कोन करबा focus जोरा कि denoted by f okay now comes to the convex mirror the inner hollow surface is silvered and polished just हम inner surface ता को polish करले so that जो bulge out surface रहला सेटा तुमरो कोन हिजबो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हिजबो and this outward curving surface spreads light rays apart for example we have a convex spherical mirror like this okay so whenever I incident some beam of lights parallel beam of lights so beam of light in the sense जे कन्वर्जिंग बीम भी हे पारे डाइवर्जिंग बीम भी हे पारे और पैरेलल बीम भी हे पारे पैरेलल बीम माने जेतबे बंच ऑफ लाइट कोन थिबे ना पैरेलल थिबे टू ईच अदर हला
कन्वर्जिंग माने कौन से गोटे पॉइंट आड़ को रे ऑफ लाइट आसुए पंच ऑफ रे ऑफ लाइट कौन से गोटे पॉइंट आड़ को आसुए डाइवर्जिंग माने स्प्रेड होथुए कौन से गोटे पॉइंट रो बाहर कि ना बाहर को स्प्रेड होथुए दैट इज कॉल्ड व्हाट डाइवर्जिंग आउट तो जते बळे हम कोन करबा कौन से गोटे कन्वेक्स मिरर नै जिबा एंड ता ऊपर पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेबा कोन हबो ना रे ऑफ लाइट्स गुडा को एमती बाहर को स्प्रेड हे जिवो किछि टाइप हला जो गुडा कि कोनोसी गोटे पॉइंट रु आसला बळे हमकु देखा जिवे देख appears to comes from a point and that point is called focus focus हमें आगु को देखियो तो एटी कोन होचंदी रे ऑफ लाइट गुडा को डाइवर्ज हे होचंदी जेहेतु एटी डाइवर्ज हे होचंदी और स्प्रेड हे होचंदी आको हम कोन कहबा डाइवर्जिंग मिरर कोन कहबा डाइवर्जिंग मिरर क्लियर पूरा पूरी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर आई होप मन भी रही है कि कनकेव मिरर जदि थिबो ताल दर भीतर पटटा कोन थिबो ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस थिबो इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस थिबो एंड जदि हम पाखरे कन्वेक्स मिरर अछि ताले रिफ्लेक्टिंग सरफेस टा आउटर साइड रे थिबो आउटर साइड रे ओके नेक्स्ट कम्स टू नो समथिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर्स माने हमें एबे कोन करिवा स्फेरिकल मिरर्स रो विषय टिके भलसे पढिबा एंड जानियो कि मिरर रो को पार्ट को कोन कहउछ हला तो मु कोन करछि गोटे स्फीयर एज्यूम करछि देखाउ तुमको गोटे व्हाइट कलर स्फीयर मु एटा आगरो टिके ड्रा कर देगी आछि दिस इज द व्हाइट कलर स्फीयर से स्फीयर रो गोटे छोटो पार्ट हम काटि की देखिबा जोटा कि हम स्फेरिकल मिरर बोली कहउछनी गोटे छोटो पार्ट काटला पर जोटा मिलु जो पार्ट टा मिलु सब स्फेरिकल मिरर हम कहले हला तो से स्फेरिकल मिरर रो अन्य पार्ट गुडा देखिबा हम को पॉइंट को कोन कहउछ लेट अस यू देखो डी बोल से मु एठी होती की पार्ट को पॉलिश कर दूछ ओके एठी होती की पार्ट वर्तमान पॉलिश हेगी अछि तो ओके ये जदि पार्ट को कोन करछि बर्तन पॉलिश करछि तो हमें ना दे दबा ए पॉइंट टा कुछ हमरो ए पॉइंट टा को कहि देली मु पी हला ओके सो एडी हम कोन देखि पाउछे ए बी जो अछि ए और बी पॉइंट जो अछि सेति भीतर हम कोन करछि पॉलिश करछि भाबो कि सेति पोर्शन मु काट दैछि अच्छा मु भीतर पोर्शन टा कोन करछि पॉलिश करछि को टाइप रो मिरर हबो कन्वेक्स मिरर हबो कोन पे कन्वेक्स मिरर हबो ना सर जो बाहर को बल्जिंग आउट एरिया अछि बल्जिंग आउट सरफेस अछि सी हमर कोन हे जाछि बर्तमान रिफ्लेक्टिंग सरफेस काहे ना आपण भीतर पटरा को कोन करछन पॉलिश करछन बुझा पड़ला ओके सो फर्स्ट पॉइंट होछ हमरो पोल पोल माने होछ कोन जो भी मिरर हमें नबा जो भी स्फेरिकल मिरर हमें नबा से स्फेरिकल मिरर मिड पॉइंट को हमें कोन करबा पोल बोली कहबा जाकु कि मु डिनोट करछि पी द्वारा ठीक अछि पोल इज व्हाट द मिड पॉइंट ऑफ मिरर सरफेस बुझि पाले नेक्स्ट कम्स टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन ना जो हमें स्फेरिकल मिरर विषय डिस्कस करछो बर्तमान एठी हमें जो स्फेरिकल मिरर नै छन से स्फेरिकल मिरर ता कोन से बड़ स्फीयर रो पार्ट हेतिबो एंड जदि सेटा स्फीयर अछि तार किछि गोटे रेडियस थिबो किछि गोटे सेंटर थिबो बस से सेंटर ता को हमें कोन कहबा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर जो स्फीयर रो से मिरर ता पार्ट हेतिबो से स्फीयर रो सेंटर को मिरर रो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोली कहबा जोटा कि सेंटर बा ठीक अछि दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट कम्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर तो जो स्फीयर रु से मिरर टा को हमें बाहर करथिले तार किछ गोटे रेडियस थिबो से स्फीयर रो किछ गोटे रेडियस थिबो बट बस दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर तो हमें एमदी कहि परिबा एटा हम रेडियस ऑफ कर्वेचर हे परिबो ओके एटा भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर हे परिबो इवन एटा भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर हे परिबो
हैला आको हमें कौन करबा ना दे देबा रेडियस ऑफ कर्वेचर हैला ठीक अछि नेक्स्ट कम्स टू योर प्रिंसिपल एक्सिस कोटा जो एक्सिस टा की मिरर रो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर देखि जाय दैट इज कॉल्ड व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस हैला देखो ठीक बोलसे प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन जॉइनिंग P and C P for pole C for center of curvature तो हम एट देखि पाछे ए जो लाइन टा हमको देखा होची दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस आको हम कोन कहि परिबा प्रिंसिपल एक्सिस ठीक अछि दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ next point is your linear aperture दिखाओ छी this is your linear aperture see एटा हमरो कोन अछि हमरो मिरर टा अछि तो linear aperture हे जो एटा this is your linear aperture हैला AB is your linear aperture or you can say diameter of the mirror boundary हैला ठीक अछि diameter of the mirror boundary जो हमें AB द्वारा कौन करबा शो करे पड़े नेक्स्ट कम्स टू एंगुलर एपर्चर दैट इज ACB अच्छा एठी हमें जो देखु चंदी कि जो APB मिरर अछि ना C पॉइंट रे केते एंगल बने पड़ जदी मु A को C को कनेक्ट करबी और B को C को कनेक्ट करबी कि छोटे एंगल बनु छी दैट थीटा एंगल इज व्हाट एंगुलर एपर्चर हैला angle ACB is known as angular aperture angle is obtained at C by mirror's boundary okay next comes to principal focus केमते बन्नी बडी के फर्स्ट देखिबा तापर आसीबा प्रिंसिपल फोकस कोन ओके एपोर्ट साइड रे मु किछि फिगर बनै के आनी छै देखो फॉर एग्जांपल एटा होछ तमरो कन्वर्जिंग मिरर this is wait this is your converging mirror तुम जदि एमती करि पार ना ताले तुम कोन करि बनछ ना एटा को एमती तुम गारो दे परिबो लाइक दिस ए टाइप रो तुम हला एमती कर पे टू शो the mirror is polished you can draw these lines okay एक तो inverted draw करे परिबो और outwarded draw करे परिबो जेहेतु मोबाइल सुविधा আছে मु तारो कोन यूटिलाइजेशन कोच हम यदि नोट रे लिखुछ तो तमे एमती नॉर्मली किछि लाइंस ड्रॉ कर परिबो ठीक अछि और सेठी कतरे पेंसिल पकि सेम किछि लेवलिंग करे दरकार ओके तो मु फर्स्ट कोन बने दिली कहलो एटा को टाइप ऑफ मिरर बनला एटा देखि कहलो एटा होस तमरो को टाइप ऑफ मिरर कनकेव मिरर को टाइप मिरर बनी गला हमरो कनकेव मिरर केमदी ना बाहर सरफेस टा कोन गले हम पॉलिश कर देले भीतर सरफेस हमर कोन हला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हला ठीक सेमिति आ गुटे हमें कन्वेक्स मिरर बने नवा दिस इज योर कन्वेक्स मिरर देखो मु भीतर पटटा कोन गली बर्तन पॉलिश कर देली बाहर पटटा कोन हला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हला ओके एबे हम कोन करिवा रेज ऑफ लाइट्स गुडा को पास करे फर्स्ट मु कनकेव मिरर ऊपर पास करे कि देखु हला देखो सॉरी फर्स्ट मु कनकेव मिरर गुडा को ऊपर पास करे कि देखु जदि गोटे रे ऑफ लाइट एमदी पास करिवो ताको हम कोन कहबा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ना ठीक अछि एंड हम बहुत सारा रे ऑफ लाइट को कोन करबा पास करेबा जब हम रे ऑफ लाइट गुडा को पास करोचे बा इंसिडेंट करोचे से माने जाय कि हमरो कनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आसी पड़िबे तापर कोन होबो रिफ्लेक्शन हला परे
देखो सब गुड़ाक रे ऑफ लाइट कौन करेंगे गोटे पॉइंट ऊपर आसिक इंटरसेक्ट करेंगे ए रे ऑफ लाइट आसिक ए पॉइंट रे इंटरसेक्ट करला सेमती ए रे ऑफ लाइट आसिक सेम पॉइंट रे इंटरसेक्ट करला सेमती इठू रे ऑफ लाइट आसिक सेम पॉइंट रे इंटरसेक्ट करबो ओके बुझी पड़छो तो तो सब गुड़ाक रे ऑफ लाइट कौन सी गोटे पॉइंट रे आसिक इंटरसेक्ट करछन एंड दैट पॉइंट इज योर फोकस पॉइंट बुझी पाले हम बोल से कि जो पॉइंट रे पैरेलल बीम गुड़ाक रिफ्लेक्शन पर आसिक ना इंटरसेक्ट करछंती ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दोस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस पॉइंट एटा हमें कनकेव मिरर केस रे देखले दिस इज योर कनकेव मिरर सेमिति हमें कन्वेक्स मिरर केस रे भी देखि परिबा देखो ठीक बोलछे रे ऑफ लाइट्स को पास करबा ये होछ गोटे रे ऑफ लाइट बेसी बनौना मु दीटा चारटा ही बनौ छला थर्ड ये होछ फोर्थ ओके तो ए केस रे हमें कोन देखिछे कि रे ऑफ लाइट्स गुडा को एडी डाइवर्ज हेबे सेठी कोन होतले कनकेव मिरर केस रे कोन होतले कन्वर्ज होतले कोन से गुडा पॉइंट आडू को आस्तले एठी कोन होबे डाइवर्ज हेबे माने स्प्रेड आउट हेबे बाहर को स्प्रेड हेबे ठीक अछि तो से माने जाय कि पछाड़ जति से हमें रिफ्लेक्टेड रे गुडा को हमें कोन करिया एक्सटेंड करबा देखो ए गुडा सब कोन रिफ्लेक्टेड रे हला ए रिफ्लेक्टेड रे गुडा को कोन करिया हम पछाड़ को एक्सटेंड जति करबा से माने कोन गुडा पॉइंट रु बाहर आबे देखा जिवो हमको एंड दैट पॉइंट इज डिनोटेड बाय योर फोकस पॉइंट तो ट्राई करछि कोन से गोटे पॉइंट रे ही आनी कि इंटरसेक्ट करया पे लेट्स सी होछि कि ना जदि होनी टिके एडजस्ट कर दो मोस्टली टिके टिके तो हल्ला ओके सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज योर फोकस पॉइंट मैं एरो मार्क्स शो कर दोची रे ऑप्टिक्स आपने एरो मार्क्स दबा दरकार माने कोनोसी फिगर जदि करछो एरो मार्क्स दबो सो दैट हमहु जाना पड़िबे लाइट ता को डायरेक्शन में जाउछ बा इंसिडेंट लाइट कोटा रिफ्लेक्टेड लाइट कोटा रिफ्रैक्टेड लाइट कोटा न जाना पड़िबनी हला सेतरे मार्क कर जाय परबो सेति में बी अवेयर ऑफ द एरो मार्क्स आल्सो दोती एटा में को मिरर केस देखले कन्वेक्स मिरर केस देखले ओके नेक्स्ट एठी देखो principal focus is the point where rays parallel to axis converge in case of concave or appear to diverge in case of convex तो एडी हमें बुझी पाले ना कि जो पॉइंट राशि के इंटरसेक्ट करछन सेटा को फोकस पॉइंट कहबा इन केस ऑफ कनकेव मिरर जदि हम पाखरे कन्वेक्स मिरर अछंती ताले से केस रे कोन हबो कोनोसी गोटे पॉइंट हमको बाहर लागे देखा जिवो जेहेतु सेटी डाइवर्जन होउची माने रे ऑफ लाइट गुडा डाइवर्ज जेहेतु होउछन स्प्रेड जेहेतु होउछन से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो हम पछाड़ को एक्सटेंड करके देखिबा से कोनोसी गोटे पॉइंट बाहर लागे देखा जिवो ठीक एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट फोकस पॉइंट बुझी पालो बोल से अच्छा नेक्स्ट there are some additional terms that is focal length and focal plane focal length कोडा देखो ठीक है छुआ मन रखो आउट जिंसो जो फोकस पॉइंट ता बनिबो ना से फोकस पॉइंट ता P और C मझिरे ही बनिबो हला तो मु एटी बने दोछु मझिरे एटा को नाम दिली मु F हला तो तमरो सेंटर ऑफ कर्वेचर रु फोकस पॉइंट भितरे जो डिस्टेंस अछि और P रु बा पोल रु फोकस पॉइंट भितरे जो डिस्टेंस अछि ता को हम कोन करबा फोकल लेंथ कोन कहबा फोकल लेंथ ठीक अछि बुझि पारलो हमें आगु जे देखिबा कि आपण जो कहलु ना पी एफ को फोकल लेंथ कहबा एफ सी को भी फोकल लेंथ कहबा दिजा सेम अछि कि सर हां सेम अछि हमें आगु जाय कांग्रेस रो प्रूव भी करियो हला ठीक अछि टोटल टा को तमरो कोन को आजिबो रेडियस ऑफ कर्वेचर ए टोटल टा को हम कोन कहबा रेडियस ऑफ कर्वेचर टोटल टा लाइक पोल टू तमरो सेंटर ऑफ कर्वेचर भितर जो डिस्टेंस अछि ताको हम कहबा रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक ओके तो तुम मेंशन करछे एंद्र भी आउ मेंशन करिया कोन दरकार ठीक अछि नेक्स्ट कम्स टू फोकल प्लेन दैट इज अ प्लेन through focus perpendicular to principal axis rays at small angle converge here एबे हमें कोन करिया फोकल प्लेन कोन देखियो
एटी हम फोकस पॉइंट पाई गले फोकल प्लेन देखिबा कनकेव मिरर है ना फोकल प्लेन ऑफ कनकेव मिरर तो जस्ट हमें पढ़ले कि किछि पैरेलल बीम्स अछि जो माने कि आसिकी इंसिडेंट करछन्ती मिरर रो सरफेस ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर एंड से माने कोन करछन्ती कोनसे गोटे पॉइंट आसिकी इंटरसेक्ट करछन्ती एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस पॉइंट से इंटरसेक्ट करछन्ती और appears to intersect or you can say appears to come from that in case of convex mirror that is known as focus point focus plane माने कोन focal plane माने कोन देखो ठीक है जदि रे ऑफ लाइट गुडा को पैरेलल थिबे बट से माने प्रिंसिपल एक्सिस तो पैरेलल न थिबे से केस रे कोन हो देखियो टी मो एबे किछि रे ऑफ लाइट को ड्रॉ करछि दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस गोटे रे ऑफ लाइट पैरेलल में पास करेली हला आफ्टर रिफ्लेक्शन से किछि टाइप ऑफ पास करू सो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आको हमें एरो मार्क्स देके शो कर देबा incident ray of light and this is reflected ray of light आउ गुटे हमें ray of light नबा जोटा कि फर्स्ट ray of light से तो पैरेलल अछि देखो ओके जोटा कि मु पोल ऊपर आनी के इंसिडेंट करली से कोन हो रिफ्लेक्शन परे एठी छुआ जति के एंगल बनैतिला एठी जति के एंगल बनैतिला सति के एंगल लगा से कोन करिवो रिफ्लेक्ट करिवो हला त मडी मार्क कर दोछि दिस इज योर इंसिडेंट ray of light देन हम कोन करबा रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बने दिस इज रिफ्लेक्टेड रे देखो डी बोलसे जे जुजा कोडी आसी इंटरसेक्ट करले प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर आसी इंटरसेक्ट करले कि नहीं से माने कोन करिवे जोटी फोकस पॉइंट थिबो हला तार परपेंडिकुलरली कोनोसी गोटे जगह रे इंटरसेक्ट करिवे सो एटा ताले कोटी इंटरसेक्ट हला हमें एठी जदि गोटे प्लेन को इमेजिन करबा देखो दिस इज अ प्लेन जो प्लेन ऊपर की कियो अछि फोकस पॉइंट अछि तो इंटरसेक्शन ता कोडी हला बर्तन फोकल प्लेन रे सो दिस प्लेन इज कॉल्ड एज फोकल ठीक अछि मन रखि तो एटा हमको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रे दरकार आसपर कि फोकल प्लेन माने कोन ठीक फोकस पॉइंट केमिति कोन होउछि बा फोकस पॉइंट केमिति कोन मिलला हमको एंड फोकल प्लेन कोन हम भलसे बुझले हला ओके तो फिगर गुडा सोजा खातर तमे ड्रॉ करो रे ऑप्टिक्स चैप्टर रे बहुत सारा फिगर्स अछि यू हैव टू ड्रॉ ऑल ऑफ देम बाय योर ओन हैंड ओके ठीक अछि बहुत से बुझियोले और कुछ दिन सो रहि होला ओके एपर्चर ता मेंशन कर दोछु मु फिगर रे this is your aperture ठीक अछि this is your aperture okay बहुत से बुझा पड़ला अच्छा C is your center of curvature okay next comes to a new topic that is new Cartesian sign convention हमको फर्दर आगो पढिया पे हेले हमें किछि रूल्स को मानिया को पड़बो रे ऑप्टिक्स रे हमें कोन करियो पड़िबो किछि गोटे रूल्स को मानिया पड़बो टू ड्रॉ इमेजेस एंड जतो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करिया सेठी भी हमको ए टॉपिक ता बहुत ही हेल्प करियो थ्रू आउट द रे ऑप्टिक्स चैप्टर हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को यूज करियो माने हमें जानिबार अछि कि जहां भी हमें मेजरमेंट्स नोचे सेटा पॉजिटिव वैल्यू पे पकेबा और नेगेटिव पकेबा ठीक अछि तो देखो ठीक सो मैं कंसीडर करछि गोटे concave mirror as you can see over here I have considered a concave mirror on which we are going to discuss the topic new Cartesian sign convention so here it is written to draw any ray diagrams and solve mirror problems a new Cartesian sign convention is followed according to this convention किछि पॉइंट्स अछि सेगुडा बिषय डिस्कस करियो सो फर्स्ट मु तुमको ओवरऑल कहि दोछु त हम डिस्कस करियो ठीक तो हमें रिफ्लेक्शन कोनोसी भी फेनोमेनन हवा पाए हमें कोन करियो पड़े फर्स्ट ऑब्जेक्ट नबा पड़ो हां जदि पर्टिकुलरली रिफ्लेक्शन विषय हम डिस्कस करिवा फर्स्ट गोटे ऑब्जेक्ट नबा तापर सेटु रे ऑफ लाइट आसीबो हां नै देन हमर इमेज फॉर्मेशन होबो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड
रे फॉर्म ये कोन इमेज फॉर्मेशन हबो तो इमेज फॉर्मेशन करिया पे हमको कोन करे गोटे ऑब्जेक्ट नबा पड़ो से ऑब्जेक्ट जो हमें नबा मन रखो सब दिने मिरर रो लेफ्ट साइड रो हला तो मैं ऑब्जेक्ट गोटे ड्रा कर दउ छी द ऑब्जेक्ट is always in the left side of the mirror जदि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रे रखिला रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रो डायरेक्शन कोकड़े होबो छ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हां कि ना दिस इज योर इंसिडेंट लाइट ओके ठीक अछि ओके आउर जिंस देखो एटा हम पाखरे जो मिरर अछि से मिरर रे ए जो मिड पॉइंट को हम कोन कहबा पुल आको टिके फॉल्स मन रखि तो एठी हम ऑब्जेक्ट नै छथि जोटा को मु ओ द्वारा डिनोट करू छी हला ओके एबे आमे कोन करिया रूल्स गुडा को बोलसे जानि तो मु कोन करली फर्स्ट रे कोनोसी भी मिरर हो किछि फरक पड़नी ऑब्जेक्ट को रखि दबा लेफ्ट साइड रे तो लेफ्ट साइड जदी ऑब्जेक्ट को रखिबा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट्स गुडा कोड आसीबो लेफ्ट टू राइट साइड को आसीबो एति आमे फिक्स करके माइंड रे मन रखि देई पारले सेकंड आमे कोन करिवा तार रूल्स गुडा देखिबा जेति की भी मेजरमेंट तमे मिरर को बेस करके करिवो से गुडा को सब पोल टू मेजर हो कोड मेजर हो छ पोल टू मेजर हला एबे जेम देखि मु दिटा डिस्टेंस नै परिबि गोटे होछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गोटे होछि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माने कोन पोल टू ऑब्जेक्ट ता केते डिस्टेंस रे अछि दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेमति इमेज डिस्टेंस माने कोन पोल टू इमेज ता केते डिस्टेंस रे अछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमें u द्वारा डिनोट करछोंती एंड इमेज डिस्टेंस को हमें v द्वारा डिनोट करछोंती हला तो जदी मु कोनोसी मेजरमेंट लेफ्ट टू द पोल करली माने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे करली लाइक दिस measurement is done in the opposite side to the incident ray of light then तारो जो वैल्यू टा को हमें कोन करबा नेगेटिव रे न कोथरे नबा नेगेटिव रे नबा एठी हमें डिस्टेंस को मेजरमेंट करि परिबा तो लिखि दउ छी एठी डिस्टेंसेस जेहेतु इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे अछि एठी जहा भी डिस्टेंस हमें मेजर करबा सेटा हबो तमरो नेगेटिव जदि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रो डायरेक्शन रे हमें कोनोसी मेजरमेंट होछि जेमति कि डिस्टेंस तो सेटा कोन हे जबो तमरो पॉजिटिव देखो एठी मु सेकंडली जो डिस्टेंस रा को ड्रा करली सेटा देखो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रो डायरेक्शन रे अछि तो सेठी हमें जो डिस्टेंस मेजर करके लिखिबा सेटा तमरो हे जबो पॉजिटिव हला नेक्स्ट हमें देखिबा हाइट ऑब्जेक्ट जो अछि से प्रिंसिपल एक्सिस टू परपेंडिकुलर थिबो हां कि ना इमेज जो अछि से भी प्रिंसिपल एक्सिस सहित परपेंडिकुलर थिबो ठीक तो तार हाइट एक तो ऊपर को रहल तो तळु रहल ठीक अछि जदी हाइट अपराइट अछि अपराइट माने प्रिंसिपल एक्सिस रो ऊपर को अछि ऊपर डायरेक्शन रे अछि ताले हमें कोन करिया तार हाइट को पॉजिटिव नै जेबा हाइट इज टेकन एज पॉजिटिव हला सेमति मु गोटे इमेज बनाइ दउ छी देखो ये यूज कमन लेट्स से इमेज तो जेहेतु एठी इमेज हो ऑब्जेक्ट हो व्हाटएवर इज दैट तो जेहेतु तारो जो हाइट रो डायरेक्शन अछि तळु को अछि हला तो हम कोन कहबा डाउनवर्ड अछि एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस अछि आर जो हाइट अछि हम नै जेबा कोन नेगेटिव एठी हाइट नै जेबा हम नेगेटिव बुझि पालो दिस इज ऑल अबाउट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हला देखो मु पढ दउ छी फेर औतरे फर्स्ट रूल इज व्हाट all ray diagrams are drawn with the incident light traveling from left to right the incident light jo achi they travel from left to right second case all distances are measured from whole of the mirror etu hi सब distance को हम कोन कर परिया measure कर परिया third distances measured in the direction of incident light are taken as positive एकदम फॉल्स देखि परछो जो भी डिस्टेंस को हमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रो डायरेक्शन रे नोचे सेटा को हमें पॉजिटिव नै आउछे सेकेंडली जदी तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे अछि दैट कैन बी टेकन एज नेगेटिव देखो एटी मु डिस्टेंस को ऑपोजिट डायरेक्शन नै छि कहरो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रो सेति में आको हमें नेगेटिव कोइ परियो नाउ कम्स टू द height measured upward and perpendicular to the principal axis are taken as positive देखो एटी बोलछे कि मु एटी हाइट को कम करछि ऊपर को रखिछि तो एटा हे गेलो हम पॉजिटिव हाइट से तळ जदी हाइट रहबो ताको नै जेबा हम नेगेटिव हाइट मेजर्स डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस
are taken as negative. So this is all about the new your Cartesian sign convention. भलसे बुझा पड़ला चलो एटा बहुत भलसे मन रखो पूरा पूरी रे ऑप्टिक्स चैप्टर रे जेतेबेले तुम मिरर प्रॉब्लम किबा हमें आगो जाके लेंस प्रॉब्लम सॉल्व करिया से सब गुडा करे हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को यूज करिया मन रखि देले हमें कोटा पे पॉजिटिव निया हबो और कोटा पे नेगेटिव निया हबो ठीक ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव a relation between f and r f छुआ कोन f टा होछ तमरो फोकल लेंथ f टा होछ फोकल लेंथ and r होछ कोन रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके तो मु एटी गोटे कनकेव मिरर नै छी हला देखो ठीक तार बाहर पटटा मु पॉलिश कर दउछी so this is a concave mirror suppose I incident a ray of light that is parallel to the principal axis like this okay so this is your incident ray of light figure को बोल से देखते हो हला this is your incident ray of light सेठी इंसिडेंट हला परे कोन हबो रिफ्लेक्शन हबो रिफ्लेक्शन हबा पूर्व हम कोन करिया पड़ो फर्स्ट रे गोटे नॉर्मल टानिया पड़ो सर एटी तो कर्व सरफेस अछि नॉर्मल केमति टानिबा किछ नै टेंजेंट दे जाओ जल्दी मोडी गोटे टेंजेंट नेबी देखो ठीक टेंजेंट किछ एटा रखा जाओ ए सरफेस प्रति गोटे कोन करिया हम टेंजेंट नै जाओ तो टेंजेंट रो हम नॉर्मल टानी परिया कि नै यस तो आम कौन करिया पड़ता नॉर्मल टाइम सो नॉर्मल ला केन देखा जाबो देखो दिस इज नॉर्मल फॉर द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अब मन रखो जो नॉर्मल में तुम टाणी लो सेटा सब किने से मिरर रो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखि जिवो हला ठीक एबे कोन हो रिफ्लेक्शन केस रे हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखथिले जति के एंगल रे आसे कि लाइट इंसिडेंट करूची सेति के एंगल रे का कोन हो रिफ्लेक्शन हला जनो को हमें कोन बोलले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोली कहते से एंगल टा को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते तो मैं ड्रा कर दूची रे ऑफ लाइट टा को okay so this is your reflected ray of light the reflected ray of light जो अछि से को पॉइंट रे से इंटरसेक्ट करिवो प्रिंसिपल एक्सिस रे फोकस पॉइंट रे एटा हमें जस्ट डिस्कस करके आसले कोनोस भी रे ऑफ लाइट जदी प्रिंसिपल एक्सिस तो पैरेलल आसला से कोन हबो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट देखि कोन हबो रिफ्लेक्ट करकिना जी ओके तो एठी जो एंगल बनुची आको हम लिखि दबा आई एंड एठी जो एंगल बनला ताको हम लिखि परिबा कोन आर हला टिके मु okay this is your r अच्छा मो आ गोटे एंगल नोची जोडा कि एठी बनिची दैट इज एज अल्फा हला एंड नाउ द वर्ड के दिस इज योर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ab हला एंड bc इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ठीक अछि चलो तो bc लिखियो ना bd लिखि दो नॉलेज c कंफ्यूजन होबो एटा bd लिखि दो चलो एबडी के देखो एठी होती कि तमरो जो अछि दिस इज योर पोल ना तो पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर भीतर जो डिस्टेंस होता कोन कहबा हम रेडियस ऑफ कर्वेचर हला आको हम कोन कहबा रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट टू पोल भीतर जो डिस्टेंस होता ताको हम कोन कहबा फोकल लेंथ होंगे ना बुझ पारती इनसु ओके एबे हमें डेरिवेशन करबा देखो ठीक बोलछ पूरा पूरी फिगर टा बुझा पड़ गेला एबे तमे कोन करिवो फिगर टा भी बोलछ देखियो हला देखो एठी रिफ्लेक्शन हला तो हमें एठी कोन कर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कोन कहूची
एंगल I should be equals to एंगल R. तो हम लिखि परिबे according to laws of reflection, angle I is equals to angle R. ओके ना ओके एबे देखो जो AB अछि देखाउ छै AB is parallel to PC. ओके ना AB is parallel to PC. जदि AB parallel to PC हला आउ एठी एटा तुमरा नॉर्मल हला ताले भलसे देखो ठीक है एठी गोटे एंगल आ एठी गोटे एंगल बनुछ ना आ इधर एंगल कोन होबे इक्वल हेबे एठी के हम जानि छथि ताले सेही हिसाब रे हम कोन लिख परिबो सर I equals to alpha हे परिबो लिखिबा ठीक as AB is parallel to PC, angle alpha, or you can say angle I is equals to angle alpha. Okay ना मानो this is equation number 1 and this is equation number 2. एबे देखो ट्रायंगल BFC देखा उची ट्रायंगल BFC हला in triangle BFC इक्वेशन 1 को देखो ठीक I equals to R अछि इक्वेशन 2 को देखो ठीक I equals to alpha अछि तो इक्वेशन 1 और 2 जदि हमें इक्वेट करबा बा कंपेयर करबा हमको कोन जना पड़छि लेफ्ट साइड सेम अछि तो राइट साइड कोन हबो इक्वल हबो माने R equals to हमें अल्फा बोली लिख पारे हला तो इन ट्रायंगल BFC एंगल R is equals to एंगल अल्फा लिख परिबा कि दोस्तों जदि एंगल R एंगल अल्फा से तो छुआ समान हला ताहले CF जो साइड अछि और BF जो साइड अछि इतरा इक्वेट हेबे जानि छथि हमें कोनोसी भी ट्रायंगल दे दीटा एंगल जदि इक्वल होछि तार करस्पोंडिंग साइड कोन हबो इक्वल हबो तो मैं लिखि परिबी therefore your BF that is not your BF I am talking about this figure okay BF equals to C ठीक लिख फिर हम एमदी अच्छा FB पढ़तले आप भलो होना नहीं कि C BF को हमें कौन FB को हमें कौन बोले CF से तो इक्वल कर दिले एबे देखो ठीक है for a small aperture of mirror small aperture माने कोन जो आर साइज अछि आर साइज को हमें बहुत सानो मानिबा जदी कंसीडर करू छथि ताहले मु कहि परिबी कि FB माने F पॉइंट और B पॉइंट पाखापाखि इक्वल और FB FP गोटे कथरा बुझडी के मोडी कोन कहूची ए जो साइज ऑफ मिरर अछि ना ताको सानो कर दोछि जदी मु सानो कर देबी ताहले जो B पॉइंट अछि से P पॉइंट ऊपर पळा जीवनी बुझी परछ ना मु कोन कहूची देखो एटा तुमरो साइज अछि एठी मगर तुमरो B पॉइंट अछि तुमरो P पॉइंट अछि हला मोर साइज टा को बहुत सानो कर देबी तो B पॉइंट P पॉइंट पाखापाखि पळा जीवना बुझो ठीक है मु कोन कहय चाहूची आई होप बुझी परथो रे माने हमरो जो मिरर अछि मिरर टा एमडी अछि एठी तुमरो P पॉइंट अछि सॉरी B पॉइंट अछि और P पॉइंट अछि जदि मु मिरर टा को कोन करी सानो कर देबी ताले B पॉइंट टा P पॉइंट पाखु पळा जीवना नै जदि पळा अछि ताले मु देखि परिबी कि हमरो जो FB अछि से पाखापाखि इक्वेट हे परिबो FP से FB जते हिजबो FP से हला मोडी कोन कंसीडर करछि फॉर स्मॉल एपर्चर ऑफ द मिरर for small aperture of the mirror you can write FB equals to FP B point of P point को आसीबो and FB जते होगा FP से अच्छा एबे हम कोन करबा देखिबा CP टा कोन हो नाउ CP टा को कोन लिख पे देखलो ठीक है CF plus FP ओके ना कोन लिख पे CF plus FP
CF प्लस FP हला ओके जदि FB और FP समान हले भाबो टिके जदि FB FP समान हले ताले तमरो ये समान हो कि देखो एडी FB एंड FP कोन हले इक्वल हले ठीक अछि FB FP इक्वल हले एठी एमा देखचंदी FB इक्वल्स टू CF अछि तो एडी कोन लिख परिबी CF is equals to FP हला एटा ओडी बोलছো देखो FB equals to FP अछि ना एंड एठी कोन अछि BF equals to CF अछि बुझि परछो तो एठी FB टा जेतु FP सतो समान हला एठी FB टा CF सतो समान हला तो हमें कोन कहि परिया CF टा FP सतो समान हे परियो जदि CF टा FP सतो समान हला हमें एठी CF जगह रे FP लिखि परिया प्लस FB जगह रे भी FP लिखि परिया तो CP equals to कोन ना पइला 2FP अब हे परियो जगह तो नहीं मु आ परे ए ऊपर लिखि दउ छ ठीक अछि CP टा कोन देखो तो CP टा होछ कोन एठी कि होछ कोन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड FP टा होछ कोन हमरो फोकल लेंथ तो एठी लिखि दियो CP जगह कोन लिख परिया हमें R is equals to 2 into FP जगह कोन लिख परिया हमें F that is focal length so this is the relation between radius of curvature and focal length बुझी परलो कि ए रिलेशन डाउटी मन रखिबो तो F is equals to हम कोन लिख परिया R by 2 बडो बता ओके चलो next comes to rules for drawing images formed by spherical mirrors there are some rules जोड़ा को हमें मानिक ना आर इमेज फॉर्मेशन देखि परिबा हमु सुविधा हबो रे डायग्राम्स बनैबार हैला तो देखो फर्स्ट पॉइंट कोन लिखा है ए रे parallel to the principal axis after reflection passes through the principal focus in concave mirror focus point and principal focus is same thing okay concave mirror appears to come from the focus in a convex mirror मु ड्रा करके देखु छी भलसे देखा जिवो ता पूर्व मु गोटे को concave mirror बने दउ छी यूज हमर concave mirror and this is your convex mirror हला देखो ठीक सॉरी this is your convex mirror convex mirror रे बाहर साइड ता हमरो कोन दिबो पॉलिश दिबो एबे हमें कोन करिया रे ऑफ लाइट को पैरेलली पास करेगा जदि मु रे ऑफ लाइट को पैरेलली पास करू छी कहां से पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली ताले से कोन करिवो से मिरर रो फोकस पॉइंट दे की रिफ्लेक्ट हो दिस इज योर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को पॉइंट दे की गला दैट इज योर फोकस पॉइंट हला जदि हम पाखरे कन्वेक्स मिरर अछि देखो ठीक रे ऑफ लाइट को जदि मु पैरेलली पास करबी जदि मु रे ऑफ लाइट को पैरेलली पास करबी दैट appears to come from a point and that point is your principal axis a principal focus हला बडी प्रिंसिपल एक्सिस टा को ଟିକେ बने दउ छे सो दैट हमें प्रिंसिपल फोकस टा पाई परबे ओके सो दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस बुझी परलो दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दिस इज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ओके बोलसे बुझा पड़ला कोनोसी भी रे ऑफ लाइट जदि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अछि ताल से फोकस पॉइंट देखि रिफ्लेक्ट करला परे फोकस पॉइंट देखि जी ओके एक्चुअली हमें बड़ा दवा ठीक है राइट प्रिंसिपल एक्सिस को मुझे बड़ा दूर से नेक्स्ट कोई चीज कि a ray of light which passing through the principal focus in a concave mirror or directed towards the focus in a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection बहुत सारी के बुझो एठी कौन कहयो चाहूँ फर्स्ट टाइम में कौन करले प्रिंसिपल एक्सिस तो पैरेलल रे ऑफ लाइट को पास करेले तो से फोकस पॉइंट देखि पास करला आफ्टर रिफ्लेक्शन एबे हम कौन करबा फोकस पॉइंट दे की कौन करबा पास करेबा माने इंसिडेंट करेबा तापर कौन होची देखिबा
Let's say this is your focus point. This is the focus point of the mirror. मन रखो concave mirror case रे mirror of front रे focus point बनेबो और convex mirror case रे mirror ର पछपटे beside the mirror focus point बनेबो ହେଲା तो फर्स्ट रे हमें focus point देखि ray of light को पास करेबा in case of concave mirror जदि ray of light focus point देखि पास करछि ताहले according to the rule से कोन होबो parallelly after reflection parallelly pass करिवो कास को parallel हे कि पास करिवो प्रिंसिपल एक्सिस हो हला सेमिति हमें कन्वेक्स मिरर नै कि देखिबा देखो मोटे रे ऑफ लाइट को पास करली व्हिच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस हो कि ना जदि हम आगु को एक्सटेंड करियो ये फोकस आड़ को गलाडा देखा होछ हला तो जदि हमें फोकस पॉइंट आड़ को इंसिडेंट करेवा रे ऑफ लाइट को इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर सीटी भी कोन होबो रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके पास करली ठीक अछि बुझि पाले दिनसो ओके draw this figure then we will move to the next topic the next topic no or data point अच्छे बाकी हैला next a ray passing through the center of curvature in a concave mirror or directed towards the center of curvature in a convex mirror strikes the mirror normally and is reflected back along the same path अच्छा एबे एठी हमें कोन बुझले कि जदि सेंटर ऑफ कर्वेचर दे कि हमें रे ऑफ लाइट को पास करेबा आफ्टर रिफ्लेक्शन कोन हो देखो लेट्स से दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ योर कनकेव मिरर हला एठी ऑलरेडी मु बने देछि माने कोन बोलछन पॉलिश कर देछि माउस पे कोन हला एटा को टिके परसेंट को धरि पड़ा से सो दैट हमको सुविधा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनने वाले ओके लेट्स से दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो फर्स्ट में रे ऑफ लाइट को पास करेबा सेंटर ऑफ कर्वेचर देकी इन द केस ऑफ कनकेव मिरर देखो कोन होछि जदि हमें रे ऑफ लाइट को पास करेबा सेंटर ऑफ कर्वेचर देकी इन केस ऑफ कनकेव मिरर जो पाथ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हेतिबा आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को से रिट्रेस करू हला सेमिति जदि हमें कन्वेक्स मिरर देखिबा देखो एटी हम जो रे ऑफ लाइट्स बनेले से रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर देखि पास होला लागु छ हम ना एटी जेमि फोकस पॉइंट देखि पास होला लागुला सेमिति एटी सेंटर ऑफ कर्वेचर देखि पास होला लागु तो जेमिति आसी कि इंसिडेंट करथिबो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेमिति का से सेम पाथ रे रिट्रेस करबिना पड़ै छ ओके नेक्स्ट पॉइंट ए रे इंसिडेंट एट द pole of the mirror is reflected according to the law of reflection with the angle of incidence equal to the angle of reflection एबे हमें देखिया को जाउ छे कि जदी रे ऑफ लाइट कोनोसी भी मिरर रो पोल ऊपर आसी कि इंसिडेंट कला दाल कोन हो you know that कि this is your pole this is the pole of the mirror and this is also the pole of the mirror in the case of convex mirror तो हमें रे ऑफ लाइट फर्स्ट हमें इंसिडेंट करेबा पोल ऑफ द कनकेव मिरर ऊपर then after reflection कोन हो देखो after reflection same angle सहित पास कर जिवो हला एठी जति के एंगल बनथिला एठी सति के एंगल बन सेम एंगल बन सेम इन द केस यू इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर जदि हमें पैरेलल पोल ऊपर लाइट को इंसिडेंट करो छे जति के एंगल रे रे ऑफ लाइट आसी इंसिडेंट हेतला जति के एंगल रे आसी इंसिडेंट हेतला सति के एंगल देखा कोन हो रिफ्लेक्शन पीछे टाइप ओके तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो सेम इन द केस ऑफ हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जोटा कि हमें नॉर्मली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते बुझ पाला दिनसो चलो next comes to the formation of images by concave mirror हला तो हमें concave mirror को नेकिना कोन करबा इमेज फॉर्मेशन देखिबा कोठी केमि कोन इमेज बनछ तो मु किछि माने कोन कोसोनी आगु बने के आनी छी हला आ ऊपर हमें ड्रा करी देखिबा हला फर्स्ट हमें देखिबा कि जदी ऑब्जेक्ट ता बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अछि मु फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस आ ऑप्टिकल सेंटर बने दउछ देखो ठीक this is your pole
this is your cone, and this is your focus point, let's say, and this is your center of curvature. है ना? तो हमें रे ऑफ लाइट को पास करेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट कोड अछि लिखि दोछि ऑब्जेक्ट अछि बियॉन्ड सी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना? तो देखो दिस इज द ऑब्जेक्ट है ना? दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओ राइट. रे ऑफ लाइट पास करेगा अबे दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओ. बर्तमान हमें रे ऑफ लाइट को पास करेगा देखो ठीक फर्स्ट हम गोटे रे ऑफ लाइट को पास करेली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम जस्ट पढ़ले कि जदी कोनोसी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अछि ताल से प्रिंसिपल फोकस देके जिवो. ओके आ गोटे रे ऑफ लाइट को हम कोन करिया सेंटर ऑफ कर्वेचर देके पास करेंगे देखो ठीक आ गोटे रे ऑफ लाइट को हम कोन करिया सेंटर ऑफ कर्वेचर देके पास करेंगे. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर केस रे कोन हो जो डायरेक्शन रे रे ऑफ लाइट जाइला से डायरेक्शन रे वापस आस जिवो आउ जोटा पैरेलल थिला सेठी कोन हो फोकस पॉइंट देकी पास करेगा. हम भल से देखो ठीक कोडी इंटरसेक्ट करछंदी ए पॉइंट इंटरसेक्ट करछन ना. सो एठी हमर कोन हो गोटे इमेज बन जे हैला. सी दिस इज योर इमेज. तो इमेज टा कोडी बनला बिटवीन सी एंड एफ हैला. तो इमेज फॉर्मेशन हमको कोड देखिया मिलला बिटवीन C and F. एक टिके लेटर साइज सामना अछि हैला ट्राई करो देखिया पे. देन हमें कोन करबा नेचर देखिबा कि एठी जो इमेज टा बनला से इमेज रो नेचर कोन हो. देखो एक तो तमरो रियल इमेज बनिबा ना तो वर्चुअल इमेज बनिबा. तो एठी हमें माने लास्ट क्लास में डिस्कस करले रियल इमेज कते बळे बनिबो तो कि रे ऑफ लाइट गुडा को एक्चुअली मीट करथुए एठी एक्चुअली मीट करछोंदी. यस तो एठी जो इमेज बनला सेटा को टाइप रो इमेज हो रियल इमेज हो ठीक. दिस इज योर रियल इमेज एंड एक तो ये इरेक्ट हो ना तो वर्चुअल हो. ऑब्जेक्ट को दिके भलसे देखो ऑब्जेक्ट रो हाइट रो डायरेक्शन टा जो अछि से इमेज रो हाइट रो डायरेक्शन जो सेम डायरेक्शन रे अछि ना अपोजिट रे अछि अपोजिट रे अछि ताले टी हमें लिखिबा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज टा जो अछि से कोन अछि इन्वर्टेड अछि एज कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड हला. आ जदि हम साइज विषय रे डिस्कस करिवा साइज तो हमरा हिजबो मैं लिखि दोछु साइज साइज हिजबो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट रो साइज जेते देला तारो समान स्मॉलर than the object हैला. नेक्स्ट हमें एटा बुझी गल. नेक्स्ट हमें कोन करिवा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर कोन करिवा ऑब्जेक्ट को नेकी देखिवा इमेज कोड बनउछि. तो फर्स्ट टाइम मेंशन कर दूची कोटा हमरो सेंटर ऑफ कर्वेचर अछि कोटा पोल अछि. सो दिस इज योर पोल लेट्स से दिस इज योर फोकस ओके एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आमे एबे ऑब्जेक्ट को कंसीडर करिवा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट wait सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखि गला. now object is at center of curvature माने at C हला. तो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करियो फर्स्ट. सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओके. तो रे ऑफ लाइट्स को ड्रॉ करियो गोटे रे ऑफ लाइट को नै जबा हमें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस पॉइंट देके पास करियो हला. आ गोटे रे ऑफ लाइट को फोकस पॉइंट देके पास करेबा हला से कोन हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस की रिफ्लेक्शन पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस की कोन हो पास करो एठी समान से पॉइंट पे पड़नो बेसिकली एठी टिके एडजस्ट कर दबे हला. जो इमेज टा बनिबो सेटा छुआ कोड बनिबो बोलो तमरो पर्टिकुलर सी रे ही बनिबो एठी पाखा पाखी सी माने क्लोज टू द सी अछि हला. टिके एठी एडजस्ट करो एठी फोकस पॉइंट देख के रे ऑफ लाइट पास करछि हला.
फिगर टिके एपट सेपट हे पारे एरो मार्क्स गुड़ा मेंशन कर दूची सो दैट हम जानि परियो कोपडे इंसिडेंट होला कोपडे रिफ्लेक्शन होला तो मन रखो जदि सेंटर ऑफ कर्वेचर रे ऑब्जेक्ट को नेचर इमेज कोड बनिबो छ सेंटर ऑफ कर्वेचर का बनिबो हला मुझे तो एटी रैंडम साइज नउछ ना माने सी और एफ आउ पी भितर तमर जो डिस्टेंस अछि सेटा सेम रहबो पड़िबो एठी रैंडमली जेहेतु मिले होछि पाखा पाखी सेम होछि सो दैट से इमेज रे पाखा पाखी बनछि तो जो पूरा प्रॉपर्ली करियो बोली कहले ठीक हो किछ प्रॉब्लम तो इमेज टा कोड बनला image is at C तो जति सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट अछि ताले इमेज भी कोड बनिबो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनिबो ओके देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर नेचर कोन होबो अगेन वर्चुअल होबो ना ये रियल होबो वर्चुअल और रियल होबो देखो ये बोलसे फिगर को हमर जो रे ऑफ लाइट अछन से माने कोन एक्चुअली इंटरसेक्ट करछन जेहेतु एक्चुअली इंटरसेक्ट करछन एट जो इमेज बनियो से कोटे इमेज बनियो रियल इमेज बनियो तो लिखि दबा रियल अच्छा इरेक्ट होबो ना इन्वर्टेड होबो अगेन ऑब्जेक्ट को देखो ऑब्जेक्ट अपराइट अछि एंड इमेज डाउनवर्ड बनिछ तो एटा हे जो रियल एंड इन्वर्टेड आ जो साइज विषय हम डिस्कस करिया साइज कोन रहबो तमर ऑब्जेक्ट तो साइज को सेम रहबो हला साइज जो रहिला साइज इज जो सेम एज ऑब्जेक्ट same as object okay next हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करिवा between C and F तो तापे मु मेंशन कर दूछु फर्स्ट P and this is let's say F and this is let's say C हला फिगर आउट ये बड़ा बने ही थांदा बने ही पड़थांदा ओके नेक्स्ट टाइम तो बहुत से बड़ा फिगर बना मु भाबु छी कि तुम बुझी पड़तो आई होप सो कि हां बुझी पड़सो केमते कोन फिगर बनउछ हला जदि न बुझी ताले मते पछर you can type message and comment so that I can review that and answer you okay एबे हम ऑब्जेक्ट को कोडी कंसीडर करिवा between C and F between C and F हला तो देखो this is your object I am taking at between C and F let's say this is your object first time ray of light को incident करेगा parallel to the principal axis if parallel to the principal axis ray of light pass करछि ताहले से को पॉइंट देखि जिवो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट देखि जिवो हो कि ना देखो ठीक को पॉइंट देखि गला फोकस पॉइंट देखि गला हला नेक्स्ट हम आउटे रे ऑफ लाइट को कोन करबा फोकस पॉइंट देखि लाइट से पास करे यदि फोकस पॉइंट देखि पास करू छ हमें चलिए पैरेलली पास कर जिवो विषय टाइप वेट फिगर का ठीक से बने नहीं मोर गोटे कॉपी कर दोची तापरे आखिर बड़ कर बनेवा लेट्स से ठीक तो मैं एतिकी ही करो एटा को नेक्स्ट पेज रे करूछ ओके सी मात्र फर्स्ट पढ़ुची जेहेतु टिके भूल हो गला
Okay, ମୁଁ first figure ବନା ଦଉଛି best ରହିବ. Give me some time to draw a figure. This is the principal axis, and this is your mirror. Okay, and तार बाहर पट साइड टाको हम कौन कर दवा पॉलिश कर दवा. सो हम एक्चुअली कौन करछे कनकेव मिरर विषय डिस्कस करछे ना, सो दैट हम बाहर पट साइड टाको कौन करबा पॉलिश कर दवा. ओके, एबे एटा तमरो पोल हे जिवो. This is your pole. Let's say this is your focus, and this is your center of curvature. Okay. So, एबे हमें कौन करियो ऑब्जेक्ट को नबा between C and F. है. Let's say this is your object. Wait. This is your object between C and F. Ray of light को pass करेगा. First हमें ray of light को incident करेगा on the spherical surface like this, which is parallel to the principal axis. So after reflection, it will pass through which point? The principal focus point. Principal focus टाको आपके स्क्रू में है. Let's say this is the principal focus CDR. How CDR from? Then no, after reflection कौन होगा? This is your reflected ray of light, incident ray of light. After reflection, ray of light को पर pass करेगा उसका. Focus point देखिए pass करेगा. This is your reflected ray of light. Next time कौन करेगा? Out ray of light को focus point देखिए pass करेगा. यदि focus point देखिए हमें ray of light को pass करो उसमें भी, तो ray of light कौन होगा? Parallel to the principal axis. है ना? Also देखो, this is your incident ray of light and this is your reflected ray of light. कोड जाके intersect कर ले, A point पे intersect कर ले, तो एक ही तो हमारा कौन होगा? वो image बनी जीवो. This is your कोड image बनला beyond C. है ना? Image formation कोड होगा एक केस रे. Image is formed beyond C. ठीक अछि. अच्छा, जदि हमें नेचर विषय डिस्कस करिवा, नेचर कोन रहबो? रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक अछि. फिगर देखले तुमको भल से बुझा पड़तो. जदि हमें साइज विषय डिस्कस करिवा, साइज कोन रहउछि? कोन देखा होछि साइज टा? ऑब्जेक्ट हिसाब रे लार्जर अछि ना नहीं? तो वी कैन राइट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. We can write larger than the object. Okay. मुझे कॉपी कर दिले भलो होता, but आप तो मतलब ड्रॉ करिया करो. Use the principal axis, and this is let's say concave mirror. Right here. Let's say this is your pole, this is the pole of the mirror. Pole पूर्वरु first I move polish करबो तो पछरु. This is polished.
So ray of light को pass करेगा बर्तमान हाँ तापर को this is your pole and this is your focus point and this is your center of curvature ହେଲା ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ऑब्जेक्ट को इमेजिन କରିବା बा कंसीडर କରିବା at or between pole and focus point ହେଲା P and F मझरे ଏବେ ଆମେ कंसीडर କରିବା ऑब्जेक्ट को so see this is your object ହେଲା फर्स्ट ଆମେ ray of light को parallelly pass करेगा फर्स्ट ray of light को हम कौन parallelly pass करेंगे तो रिफ्लेक्शन होबो आगे ना this is your parallel ray of light को पॉइंट देखि से पास करिवो फोकस पॉइंट देखि पास करिवो आफ्टर रिफ्लेक्शन को पॉइंट देखि पास करिवो से फोकस पॉइंट देखि पास करिवो किसी टाइप को देखियो आगे ना नेक्स्ट हम कोन करिया गोटे रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर देखि पास करबा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखि पास करू छ हमें देखियो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखि जति पास करेबा से सेंटर ऑफ कर्वेचर देखि कोन आइबो पछो पड़ आसबो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर देखि से पास कर जिवो अच्छा एपोर्ट साइड रे इमेज फॉर्मेशन वाला लागुनी कोन पे ना एपोर्ट साइड से मन के बास मीट करबे ओके ये सीधा पड़ जाओ ये पड़ आसो माने एपोर्ट साइड के बास मीट करबे सेति पे मु कोन करछु एठी पछाड को जो दीटा रिफ्लेक्टेड रे थिला से दीटा को पछाड को एक्सटेंड करछु देखियो होचे मु जदि ये दीटा रे ऑफ लाइट को पछाड़ को एक्सटेंड करबी से माने कोनसे गोटे पॉइंट जाय कि मिसी एंड दैट एट दैट पॉइंट कोन हम इमेज बन हैला एंड सेटा हमरो को टाइप इमेज हो वर्चुअल इमेज हो एटा हमरो ऑब्जेक्ट थिला एटा हमरो इमेज हमरो ऑब्जेक्ट थिला हमरो इमेज ठीक हैला तो एटी हम कोन देखले कि जदी ऑब्जेक्ट पी और एफ मझरे रहउची ताहले जो इमेज टा फॉर्म होचे सेटा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होचे हैला तो हमें इमेज कोड फॉर्म होवर देखले एबे इमेज इज beside the mirror or behind the mirror सेमिति जदि हमारा नेचर विषय डिस्कस करिवा नेचर कोन हो वर्चुअल हो ना रियल हो एटी बोलसे देखो रे ऑफ लाइट गुडा को एक्चुअली इंटरसेक्ट करना करछो नहीं they appears to intersect at a point where the image forms so that image is called as virtual image तापर एटा इन्वर्टेड हो ना इरेक्ट हो ऑब्जेक्ट को देखो ऑब्जेक्ट जो साइज टा ऊपर साइड को अछि माने ऑब्जेक्ट जो हाइट अछि तार डायरेक्शन टा ऊपर को अछि एंड इमेज रो डायरेक्शन भी ऊपर को अछि तो एटा इज होलो इरेक्ट तीटा देखो ऑब्जेक्ट रो हाइट रो डायरेक्शन इमेज रो हाइट रो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन रहला ताले इरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन रहला इन्वर्टेड हैला जदि हमें साइज विषय डिस्कस करिया साइज हमरो बहुत लार्ज हे जिवो एक इज larger than the object okay ठीक अछि बुझि पला थी इनसो next comes to the formation of images by convex mirror so हमें फर्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट कोड नबा तापर एडी मार्क कर दोछि पोल कोटा हला आ तमर सेंटर ऑफ कर्वेचर कोटा तो दिस इज योर पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर आरो राइट साइड में बिहाइंड द मिरर रहबो हला दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज योर फोकस पॉइंट ओके सो इमेज को हमें कंसीडर करिवा सॉरी ऑब्जेक्ट को हमें कंसीडर करिवा ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट infinite let's say or between infinite and code hala eport side re code gudo अछि ठीक
ताले इमेज कोड कोन बनियो देखियो फर्स्ट कंसीडर कर दियो ऑब्जेक्ट होछ हमर एटा जोटा कि इनफाइनाइट टू कोड भितर अछि दिस इज ऑब्जेक्ट दिस इज योर ऑब्जेक्ट फर्स्ट रे ऑफ लाइट को हम पैरेलली पास करेली जदि रे ऑफ लाइट को पैरेलली पास करू छै हम ताले से को पड़ जिवो देखो रे ऑफ लाइट को पैरेलली पास करेली दिस इज योर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जेहेतु एटा कन्वेक्स मिरर टा एटी कोन हो डाइवर्ज हे जिवो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट एंड द डाइवर्ज हे पड़े जो डाइवर्ज हे जिवो से तमरो फोकस पॉइंट की गला वाला देखा जिवो ताको जन पछाड़ को एक्सटेंड करबी से को पॉइंट आसी के इंटरसेक्ट करबो फोकस पॉइंट ओके सो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आ गोटे रे ऑफ लाइट को हमें कहबो पोल देखिना पास करबा जदि पोल देखि हमें रे ऑफ लाइट को पास करू छंती देखो पोल देखि जदि हम पास करू छंती ताले कोन हो रे ऑफ लाइट जति के एंगल पे इंसिडेंट हेला सति के एंगल पे कोन हो रिफ्लेक्ट हेके बाहर को पड़ जो दिस इज योर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हो एबे जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट अछि सेकंड केस ताको पछाड़ को एक्सटेंड करियो जदि पछाड़ को एक्सटेंड करियो गोटे पॉइंट आसे से मीट कर बस से तुम कौन हम इमेज फॉर्मेशन हो टाइप इमेज बन ये वर्चुअल इमेज बन एंड दैट इज आल्सो इरेक्ट कोठी बनला बिहाइंड द मिरर है इमेज कोठी बनला बिहाइंड द मिरर है ठीक अच्छे एंड जदि आम नेचर विषय कथा हुआ तो नेचर ये कौन हम को टाइप नेचर हम वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट ठीक अच्छे वर्चुअल एंड इरेक्ट सेमती साइज कौन रोचे देख हो ऑब्जेक्ट हिसाब से इमेज रो साइज टा कौन हम सान हम साइज जो भी हमें कहबा size is smaller than object ठीक अच्छे बुझी पाले बोल से ओके